Myself Sanjay Kumar Gupta, Maths and Science teacher in St. Michael Secondary, Bettiya. Students, today we shall learn about human ear in science for class 8, chapter 12, sound. Students, you know that ear plays an important role in our life, which help us to hear different types of sounds. Students, you know that sound is a vibration about which we have got knowledge in earlier classes. Now here we will learn how does our ear works. You can see in this picture that our ear has some special parts in which the outer part can be seen by us, but the inner part also plays an important role to send the sound signals to the auditory system found in our brain, and then we detect different type of sound vibrations. These inner parts cannot be seen by us, and about which we are going to know. So students, you can find that our ear has three parts, and first part is outer part. It is called outer ear, in which pinna is playing important role. As pinna, as you can see, this part just receives the sound signals or sound vibrations, and it reach this sound signal to inner part, where this part is called middle ear, where eardrum as well as auditory canal consisted. Eardrum get the sound signal in the form of vibrations, and due to this vibration it start also vibrating, क्योंकि यहां से जो भी सिग्नल यह आता है वाइब्रेशन के रूप में, यह इस ईयरड्रम पर हर्ट करता है, इस पर वो बीट होता है, और इस बीटिंग के कारण ही यहाँ का ईयरड्रम भी कंपित होने लगता है, एंड देन it again send the sound signal to the auditory canal. After that, the sound signal start vibrating the inner ear parts as cochlea. Cochlea start vibrating from that sound signal, and again it just send this signal to the auditory nerve, and auditory nerve, which is joined to the auditory part found in our brain, where all the sound vibrations are to be catched and detected. क्योंकि अब यहाँ जो इनर पार्ट में आपने देखा कि यहाँ पर कोक्लिया के साथ ऑडिटरी नर्व जुड़े हुए हैं, जहाँ कोक्लिया क्या करता है, उस साउंड सिग्नल को पुनः ऑडिटरी नर्व को देता है। ये सिग्नल हमारे ऑडिटरी सिस्टम जो मस्तिष्क में बना हुआ है वहां पर फाइनली भेज दिया जाता है, जिसके बाद हमारा बॉडी सिस्टम यह
पहचान करता है कि यह आवाज कहां से आ रही है, किसकी है, इसका पिच कितना है, और फिर यह हमारे सुनने लायक है या नहीं है। फिर उसके अनुसार यह मस्तिष्क निर्णय लेता है। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ईयर, एज आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट and inner part. Now, about this system, you can get more knowledge by this video that will be helpful to know more and more. The human body is an amazing creation of nature, the study of which has never ceased to amaze everyone since the beginning of mankind. The beauty of the world around and the innumerable mysteries of the universe are understood, felt and enjoyed by this very instrument of wonder. The 5 sense organs that account to much of our interactions with our surroundings are so sophisticated that each one of them deserves a better understanding. We now study the human ear. To decode the whole complicated behavior, we have broken down the ear into 3 broad parts, namely the outer ear, the middle ear and the inner ear. The outer ear. Physiology. The outer ear consists of 2 parts, the earlobe or pinna and the auditory canal. The cartilaginous visible outer portion of the ear is called the earlobe or the pinna. The cartilage gives the outer ear its typical flexibility. It helps us to gather sound and transports the sound to the inner parts of the ear. The outer ear continues down into the auditory canal. The dead end of the auditory canal is covered by the tympanic membrane, which marks the beginning of the middle ear. The middle ear. Physiology. The middle ear consists of the tympanum and a group of 3 very small bones, namely the malleus, the incus and the stapes. Functions of the middle ear. The tympanic membrane vibrates with sound waves. The malleus, which is in contact with the tympanum, receives these vibrations. The movement in turn rotates the neighboring bone, incus. The incus is attached to the stapes that receives the vibratory movement and transfers it to the oval window or the fenestra ovalis. An interesting fact to note is that due to the physical resemblances, the malleus is named as the hammer, the incus is called the anvil, and the stapes is called the stirrup. Remember these day-to-day objects and you will remember the middle ear. The middle ear is connected to the throat region through a tubular passage called eustachian canal. This keeps the air pressure on either sides of the eardrum equal. The inner ear. Physiology. The inner ear consists of membranous labyrinth surrounded by the bony labyrinth. The bony labyrinth consists of the vestibule, the semicircular canals, and the cochlea. The vestibule, a chamber in the center of the bony labyrinth, which communicates with both the cochlea and the semicircular canals. The oval and the round windows are both located in the lateral wall of the vestibule. The semicircular canals. The semicircular canals contain the semicircular ducts which have arisen from the utricle of the vestibular labyrinth. The cochlea. Cochlea forms a spiral which contains
the cochlear nerve. Functions of the inner ear. The base plate of the stapes bone from the middle ear fits into the oval window of the bony labyrinth and sends pressure waves into the inner fluids. These pressure waves reach the sound receptor cells present in the organ of Corti. All these receptor cells are connected to form the auditory nerve, which carries the sound impulse to the auditory center of the cerebrum, creating the recognition of sound. The pressure thus generated in the oval window reaches the end of the labyrinth and is relieved at the round window. Thus, the ears are not just auditory sense organs of the body, but have much to do with the overall balance and physical orientation of the body. So, next time when you get down from the merry-go-round and feel dizzy or off balance, you know whom to blame: your ears. Now students, it's time to read books and get more knowledge. By now, you know that sound is produced by vibrating object or parts of an object, and also that it needs a material medium to travel to our ears so that we can hear it. Students, आप जानते हो कि ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है और फिर उस मटेरियल माध्यम से यह ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है. You should also know that what is inside our ears which make us perceive sound. तो हमारे कान में कुछ अंग होते हैं about which I described just, and these help us to hear our sound signals. To understand the structure and functioning of our ears, we divide it into three parts, namely, first, the outer ear or pinna. The outer ear resembles the shape of a microphone that helps in collecting sound. यानी ये जो हमारे जो बाहरी कान है वह एक माइक्रोफोन की तरह काम करता है जो साउंड के सिग्नल को कलेक्ट करने में हमारी मदद करता है. When sound enters the pinna, it is allowed to move through a pipe like chamber of air. क्योंकि यह जो आंतरिक हिस्सा है उसमें एक चैम्बर बना होता है और यह इस चैम्बर में एयर फिल होता है. आप तो जानते हो कि ध्वनि का विस्तारण कैसे होगा, किसी माध्यम से होगा और हमारे आसपास का माध्यम क्या होता है, एयर होता है. तो हमारे कानों के जो बाहरी हिस्से से और फिर आंतरिक हिस्सों तक हवा का एक लेयर होता है जो इस साउंड के सिग्नल को अपने कंपन के द्वारा
मध्य कानों तक पहुंचाने का काम करता है। द वाइब्रेशन ऑफ द इनकमिंग साउंड आर सेंट टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर, द मिडिल ईयर। द मिडिल ईयर इज एन एयर फिल्ड कैविटी which consists of a thin flexible stretched tissue which is called the eardrum। चूंकि मैंने आपको जैसे पहले डिस्क्राइब किया कि हमारे कानों में क्या भरा होता है, हवा होता है, और यह हवा से भरी हुई कैविटी एक पतले लचीले टिश्यू से होकर गुजरती है, तो यहाँ भी कंपन शुरू होता है और इस लचीले और पतले टिश्यू का नाम ईयर ड्रम होता है, अबाउट विच यू हैव जस्ट सीन इन द फिगर। द ईयर ड्रम इज फर्दर कनेक्टेड टू 3 स्मॉल बोन्स विच मेंटेन अ वेरी डेलिकेट बैलेंस विथ इच अदर। फिर यह ईयर ड्रम 3 छोटे छोटे हड्डियों से जुड़ा होता है जो बहुत डेलिकेट, बहुत काफी नाजुक संतुलन के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। द साउंड वाइब्रेशंस कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द आउटर ईयर फर्स्ट वाइब्रेट द ईयर ड्रम which then transform the energy of the sound wave into internal vibrations of the bone structure। अब क्या होगा कि यह जो साउंड का कंपन है, यह कंपन फिर आउटर ईयर से होते हुए ईयर ड्रम को जाता है, जहां ईयर ड्रम कंपित होता है, और फिर इस को वह एक साउंड के एनर्जी में, साउंड वेव का जो एनर्जी होता है उसको वह इंटरनल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है, जहां से वह उस बोने स्ट्रक्चर को भी कंपित कर देता है। द डेलिकेट बैलेंस ऑफ द बोन इज कैपेबल ऑफ डेलिकेटिंग वेरी स्मॉल वाइब्रेशंस। क्योंकि अब ये जो संतुलन उन हड्डियों के बीच में होता है, वह इस चीज को करने में समर्थ होता है कि वह छोटे से छोटे कंपन को भी ग्रहण कर ले। देन कम्स इनर ईयर। द इनर ईयर रिसीव्स द वाइब्रेशंस फ्रॉम द बोन स्ट्रक्चर ऑफ द मिडिल ईयर एंड ट्रांसफॉर्म दिस एनर्जी इनटू नर्व इंपल्स व्हिच आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। अब ये जो हमारे आंतरिक कान होते हैं, वह मिडिल ईयर में पाए जाने वाले कंपन को प्राप्त करते हैं, और फिर इस एनर्जी को वह हमारे नसों के इंपल्स में, उनके स्पंदन में बदल देते हैं, और फिर यहां से यही स्पंदन हमारे ब्रेन को पहुंचा दिया जाता है। द ब्रेन परसीव्स दिस इंपल्स एज साउंड, और फिर हमारा मस्तिष्क इन ध्वनि के तरंगों को ग्रहण कर लेता है। Now in this picture you can see that our ear is divided in 3 parts, as first part consists pinna, then auditory canal and eardrum come, which make middle ear, and after that cochlea and auditory nerve consists the inner ears part. So here you can understand that how the ear works, how pinna vibrates and send the sound signals in the form of vibration to middle ear, and then middle ear where eardrum also start vibrating, and then this vibration is sent to the cochlea and auditory nerve, where it is again converted into sound signals and then sent to the auditory part of the brain. So about vibrations we learn in the next video. Till then, thank you.